All right. So yesterday we started off with a new topic, and that was, if I remember correctly, electrostatic potential and potential energy. तो हम लोगों को आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक हमको आज देखना है. And of course, we will start initially with potential energy because I already told you yesterday कि हम लोगों को potential energy हमने थोड़ा सीखा है 11th में, and then remaining part will be done in today's session. So going back to the idea of potential energy, what we know is, मैं थोड़ा repeat कर देता हूँ. What we know is, मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं मतलब in terms of charge बोल रहा हूँ मैं, there is no charge over here. हम लोग पहला चार्ज लेके आए, no work is done because there is nothing to oppose. यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है जो अपोज करेगा. देन हम लोग सेकेंड चार्ज ले आए. सेकेंड चार्ज को हम रख दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ r12. डिस्टेंस बिटवीन q1 and q2 is r12. There is work done. So work done to bring first charge was 0. Work done to bring second charge is not equal to 0, but it is given by some specific formula, and that is 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 by r12 into q2. राइट. मैंने कल ये स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं लिखा था, पर मैं अभी लिख रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू आल्सो गो अहेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल. राइट. तो ये जो टर्म है यहाँ पे, दिस टर्म पर्टिकुलरली इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, हम उस पर बाद में बात करेंगे. देन व्हेन वी ब्रिंग थर्ड चार्ज, लेट अस से आई एम ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज. अब ऐसा है कि तीसरा जो चार्ज है सब Q1 Q2 Q3 सब पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं हम लोग. तो थर्ड चार्ज जो है उसको अपोज पहला चार्ज भी करेगा, लेट अस से डिस्टेंस इज r13, और उसको अपोज सेकेंड चार्ज भी करेगा. सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्ज Q1 and Q3 and Q2 and Q3 as well. So work done to bring third charge is nothing but electrostatic potential of first into charge 3 plus electrostatic potential of second charge into the charge that you are bringing, right? So work done will be is equal to, I will write down this as 1 upon 4 pi epsilon 0 q1, क्योंकि पहले चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 प्लस 1 upon 4 pi epsilon 0. epsilon 0 लिखता हूँ मतलब I am assuming the surrounding space is vacuum or air, right? So q2 upon r23 into q3 एंड सो ऑन. जैसे जैसे आप और चार्जेस लाते जाओगे, तो फोर्थ चार्ज लाए तो फोर्थ चार्ज को अपोज फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेगा, सो ऑन सो फोर्थ. तो आइडिया वाज दिस कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है इसको कॉन्फ़िगर करने में, मतलब असेंबल करने में हम लोगों को बहुत वर्क डन करना पड़ा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है इसमें वो वर्क डन स्टोर हो गया, बिकॉज वर्क is a form of energy which energy can neither be created nor be destroyed. तो ये जो वर्क हमने किया वो कहाँ गया? It is stored basically. Okay. So total work done is work done to bring first charge, which was 0, plus work done to bring second charge, plus work done to bring third charge, and so on so forth. Right. Okay. Then in short, work done can also be written as force into displacement. Right. Force is the force of repulsion. For example, मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q और एक दूसरा चार्ज है Q0. ओके. हम लोगों को ये जो चार्ज Q0 है इसको Q के पास लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, एंड दैट वर्क इज गिवन बाय दिस. एंड एज आई टोल्ड यू, this work done is stored in the form of potential energy. Okay. अब
हमारे पास ऑलरेडी ये चार्ज है Q जो O पोजीशन पे है, और ये जो चार्ज है ये Q0 जो है ये लेटर से A पॉइंट पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, राइट। ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि पहले हमने चार्ज Q0 को R1 डिस्टेंस पे लाया होगा, मतलब वर्क डन किया है ऑलरेडी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है वहां पे। बट अब हमको क्या करना है, अब हमको इस चार्ज Q0 को A से B लाना है एट अ डिस्टेंस ऑफ R2 फ्रॉम कैपिटल Q, राइट। मतलब आई हैव टू मूव दिस चार्ज अगेंस्ट द फोर्स, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, दिस वन, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो इसको, फिर बोल सकते हो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q, ऐसा भी बोल सकते हो। सो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है, राइट, करेक्ट, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। तो वी विल हैव टू डू वर्क अगेन एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जब हम लोग एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो मोशन है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। तो पहले मैं ए से एक दूसरे पॉइंट पे ले जाऊंगा, मतलब आई विल मूव दैट चार्ज विद अ डिस्प्लेसमेंट डी आर बार, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। देन अगेन आई विल मूव इट with a small displacement dr bar, then again I will move this with a small displacement dr bar। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, we split up this motion into small 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 pieces। तो हर एक टाइम जब जब आप मूव कर रहे हो तब तब वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज गिवन बाय Fe dot dr bar, because I told you Fe is electrostatic force, right, that is equal to minus Fe dr। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि नॉर्मली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। एफ ई का डायरेक्शन ये है, डी आर का डायरेक्शन उल्टा है, एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब कॉस ऑफ 180 इज -1, तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस एफ ई डी आर। सो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन which will be stored in the form of small amount of potential energy when you have moved a charge Q0 by a small distance. This charge Q0 was sitting in the field of charge capital Q, so there was already a force of repulsion, and you're moving this charge Q0 against the electrostatic force of capital Q। यहाँ तक आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा है कि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, अल्टीमेटली हमको ए से बी पे लेके जाना है, राइट। तो टोटल work done to move from A to B will be stored again in the form of potential energy, or there will be increase in the potential energy, and that will be equal to integration। हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर ऑल डी यू, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ए से भी मोशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहले डी आर डिस्प्लेसमेंट, फिर डी आर डिस्प्लेसमेंट, फिर डी आर डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले डी यू इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर डी यू इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर डी यू इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग टोटल सबको ऐड करते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2, क्योंकि हम लोग R1 से R2 पे मूव कर रहे हैं, right। What is du by the way, minus Fe dr from R1 to R2, and as I told you in one of my last classes that while integrating, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है बाहर तो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लो और लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, तो R2 टू R1 कर दिया Fe dr, and as you know electrostatic force Fe is given by, तो ये हो गया R2 to R1, this electrostatic force Fe is given by
1/4 pi epsilon. Epsilon 0 कब आएगा? If the charge is kept in air or vacuum. Otherwise, if it is kept in some other medium, I'll just write down epsilon. First charge into second charge and divided by distance between them, right? So let us say r was the distance between them, तो मैं लिख दूंगा r square here dr, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square. तो I can take out 1/4 pi epsilon outside q, outside q0, outside integration r square upon r1 r raised to -2 dr. आपको r raised to n dr का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. तो 1/4 pi epsilon कैपिटल q0, you should know r raised to n का इंटीग्रेशन होता है r raised to n plus 1 upon n plus 1 r2 to r1. This will give you 1/4 pi epsilon कैपिटल q0, तो ये आ जाएगा आपका -1/r r2 by r1. वापस से नेगेटिव साइन है. आई डोंट लाइक दिस नेगेटिव साइंस बिकॉज इट नॉर्मली क्रिएट्स कंफ्यूजन. तो 1/4 pi epsilon q0 1/r r1 to r2. अभी आप करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r2 minus 1/r1. This is the equation for potential energy stored or work done in moving a charge q0 from A to B. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जो चार्ज था इनिशियली, मतलब इस डायग्राम में जो A पोजीशन था वो इंफिनिटी पे था. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पोटेंशियल का फॉर्म क्या आता है, राइट? So anyways, what we have to understand that normally we set R1 equal to infinity and R2 equal to, by notation सिर्फ R2 equal to R बोल देते हैं हम लोग, राइट? तो हमको मिल जाएगा 1/infinity, तो जीरो होता है, तो ये जो टर्म है ये गया. तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल हैव इज 1/4 pi epsilon. If you want to write 0, write 0. If you don't want to write 0, don't write 0. Q by q0 upon R. So this is the equation for potential energy at a position R, या तो at a distance R. ये potential energy का फॉर्मूला है, राइट? अब हम लोग potential energy है, इसका यूनिट होगा. So there are two units that we normally use. One is joule, one is electron volt. Okay, तो 1 joule of energy यहाँ पे डिफाइन कैसे करोगे? So 1 joule of energy stored in moving a charge of 1 coulomb through a potential difference of 1 volt. तो यहाँ पे 1 joule मतलब क्या बोलते हो आप? That it is simple. अगर हमारे पास 1 coulomb का चार्ज है, लेट अस से मेरे पास 1 coulomb का चार्ज है और मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, लेट अस से -2 और -3. मुझे अगर इस 1 coulomb के चार्ज को एक 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करना है, तो डेफिनेटली energy will be stored in the charge because I am moving the charge through 1 volt potential difference. जब भी charge move होगा ना, energy will be stored. So that energy stored when you are moving 1 coulomb through 1 volt is called as 1 joule, right? Okay. Otherwise, you also define unit in such cases as electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन भी सिमिलर है. अगर मेरे पास दो प्लेट्स है और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और मुझे एक इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 वोल्ट था, यहाँ पे 3 वोल्ट था, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, राइट? सो द काइनेटिक एनर्जी, देखो द थिंग इज इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, फिर आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट में रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट गेनिंग एनर्जी. कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज एनर्जी रिलेटेड टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी.
So the kinetic energy gained by an electron when it moves through a potential difference of 1 volt is called as 1 electron volt of energy. Right? Good. So this much was important for you to understand what is potential energy. फिर हम लोग ये पहले भी लिख लेंगे. I mean, we'll go through it again, we'll revise and we'll also make notes. और फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी डिफाइन कर देंगे. Right. Electrostatics is not really difficult, but the thing is you need to just connect yourself with the situation. सबसे मतलब basically very interesting topic, electrostatics. Okay, so we will start with potential energy, of course, and then we'll move to what is electrostatic potential. तो हम लोग potential energy से start करेंगे. We will see what is potential energy. और एक थोड़ा सा आपको little bit of theoretical background required है, तो I will also write that thing over here कि potential energy का concept कहाँ से आया and what was the necessity of doing that. Right. So what we know is electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic force, electrostatic force और फोर्सेस, क्योंकि अगर एक से ज्यादा चार्ज हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जब थर्ड चार्ज ला रहे थे तो पहले और दूसरे दो चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको अपोज करेगा. So electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic force or forces if you have more charges which is opposing the motion than forces, right? To achieve a certain configuration, of charges in a given system. मतलब in short ऐसा है कि आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे चार्जेस को साथ में लाना है. वो एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. वो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy in simple language. Okay, good. Then we know that like charges repel each other and unlike attract each other, of course, right? Okay, then a charge exerts a force on any other charge in its vicinity. मतलब एक चार्ज के पास में कोई और चार्ज होगा तो इट विल एक्सर्ट फोर्स. और मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, of course unlike charges attract each other, but we don't need it for the time being anyways. And unlike charges attract each other, so a charge exerts a force on any other charge in its vicinity. एक चार्ज के नियर अबाउट रीजन में कोई और चार्ज आ गया तो that charge will experience a force, right? तो क्योंकि अब ऑलरेडी वहां पे फोर्स है, तो मुझे अगर एक चार्ज को मूव भी करना होगा, इफ आई वांट टू मूव, ओके, तो भी उस केस में वी हैव टू डू वर्क, राइट? so some work is always done to move a charge in the presence of another charge, right?
Then, as I told you, potential energy comes from this particular fact कि आप एक charge को move कर रहे हो in presence of other charge, work is done, and this work is stored in the form of potential energy, right? So let us consider now, consider a positive charge capital Q fixed at some point in space, right? Let's say point O. हमने एक चार्ज लिया है कैपिटल Q, उसको हमने एक पॉइंट पे, पॉइंट O पे फिक्स कर दिया है, so it is fixed at that point. Okay, now what we will do is, हमारे पास और एक चार्ज है जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं. We will move that charge. So for bringing any other positive charge close to Q, right? Work is necessary क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर आप दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो तो ये कैपिटल Q का जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब उसको अपोज करेगा. तो हमको जबरदस्ती बिठाना है वहां पे जो नया चार्ज हम ला रहे हैं. सो एनी अदर पॉजिटिव चार्ज, लेट अस से स्मॉल q, इसको वहां पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स ऑफ कैपिटल Q, right? Now, as I told you, this work done is stored in the form of potential energy, or it is equal to change in the potential energy. So this work done is stored in the form of potential energy, or it changes, or it is equal to the change in the potential energy, or it is equal to the change in the potential energy. Correct. Therefore, what we can say is, हम लोग बोल सकते हैं work done against a electrostatic force is equal to change or increase in the potential energy. So therefore, what we can say is work done against an electrostatic force is equal to increase in potential energy of the system, increase in potential energy of the system, right? Therefore, what I can write down is what is work done. हमको पता है work done is Fe bar dot dr bar, and that is going to increase the potential energy du, right? Where we know that where Fe bar is the electrostatic force, dr bar is the displacement, and du is the increase in the potential energy, right? So we should know this. I'll put it on next page, where du is increase in potential energy, Fe bar is electrostatic force between, of course repulsion है यहाँ पे, between Q and small q, and dr bar is the displacement
या तो the amount by which the charge small q is displaced, right? So it is the displacement of charge q small q, क्योंकि कैपिटल q को तो हमने फिक्स करके रखा था, right? So let us now derive expression for potential energy. ये तो एक जनरल डेफिनेशन बना लिया हमने, तो ये एक जनरल बैकग्राउंड बना लिया कि what is the definition of potential energy, but the real work starts now. Expression for potential energy. अब हमको potential energy का expression derive करना है, and for this we will need a simplified diagram. बहुत easy है. Okay, let me first take line over here. Directed line segment. अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, हम लोग चार्ज कैपिटल Q को प्लस Q को O पॉइंट पे हम लोग सेट कर देंगे, राइट? इनिशियली जो चार्ज प्लस स्मॉल q है वो है A पॉइंट पे, ऐसा मान लेंगे. ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायरेक्शन है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर लिख रहा हूँ, करेक्ट? हमको A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज प्लस स्मॉल q को डिस्प्लेस करना है, तो ये आ गया आपका B पॉइंट ओवर हियर, राइट? देन द आइडिया इज प्रिटी सिंपल. हमने पहले बोल के रखा है कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम O टू A, मतलब जो इनिशियल पोजीशन होगा किसका, चार्ज का, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q, दैट वाज R1. देन जो फाइनल पोजीशन है B, किसका, चार्ज स्मॉल q का, उसका डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज कैपिटल Q इज R2. ये फाइनल पोजीशन है. आई विल राइट डाउन दैट इन लेटर. देन एज आई टोल्ड यू कि हम जब A से B चार्ज को लाएंगे, तो हम लोग A से B चार्ज को लाएंगे तो वी विल make small steps of dr. Okay, right? So this was R1, this is R2, this is small dr, and we will be making small steps. हमको चार्ज प्लस स्मॉल q को A से B पे लेके जाना है. हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में वो काम करने वाले हैं, राइट? गुड. So this is overall what we are going to do. Simple. Okay. So we'll again start by explaining कि हमारे पास क्या है और हमको क्या करना है. तो you just have to explain it over here, right? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी चार्ज कैपिटल Q है जो O पे है, वो मैंने पहले भी बोल के रखा है, तो I will not do it again. So let us consider the electrostatic field due to a source charge plus capital Q, right, placed at the origin O. Then let a small charge
plus small q be brought from point A to point B at respective distances r1 and r2 from O at respective distances r1 and r2 from O against the repulsive force due to charge capital Q. तो हम जब A से B स्मॉल चार्ज को लेके जाएंगे तो वी आर डूइंग इट अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ चार्ज प्लस Q. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, राइट? देन हमको पता है वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने डिनोट किया है एफ बार ई, एफ ई बार बेसिकली, राइट? तो आई विल राइट इट डाउन लेटर, राइट? इन डिस्प्लेसिंग, तो हम लोग बेसिकली डिस्प्लेस कर रहे हैं स्मॉल चार्ज क्यू को अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई बार in displacing the charge small q through a small distance, right? Okay, through a small distance कितना लिया है हमने? dr bar, वो मैं लिखूंगा through a small distance, or displacement is better, through a small displacement appears as increase in the potential energy of the system. So what I am saying here is हमको A से B स्मॉल चार्ज को ले जाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई बार, राइट? एंड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर बार, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसको स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्प्लिट कर रहे हैं. each small displacement is dr bar, and this work done while displacing through small displacement appears as increase in potential energy, and that is given by du is equal to fe bar dot dr bar, which is equal to fe dr cos theta, right? But what we know is theta is equal to 180 degree, since fe bar and dr bar are oppositely directed. Therefore du is equal to fe dr cos of 180, which is minus fe dr, right? Therefore what we have is, therefore increase in the potential energy while you displace the charge plus q from A to a small distance, displacement dr is minus fe dr, correct? Right. अब ओवरऑल तो हम चार्ज को A से B पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहे थे, तो we will have to talk about the total change in
or total increase in potential energy, right? So for the displacement, of the charge from the initial position A to, just a minute. So for the displacement of the charge from the initial position A to the final position, finally हम कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, to the final position B. The change or increase to the final position B, the change or basically increase in the potential energy is given by, right, potential energy of the system, of course, of the system is given by. तो आप पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा, टोटल चेंज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. वी आर नो मोर टॉकिंग अबाउट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल. So that is basically work done from A to B is equal to change in potential energy is equal to integration from R1 to R2 du is equal to, du क्या है हमारा, ऊपर लिखा है मैंने, is equal to minus sign outside R1 to R2 FE dr. Now it is up to you if you want to basically reverse the sign, reverse the limits, negative sign को absorb कर लो, limits reverse कर लो, it's up to you. Okay, but what we know is Fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon capital Q small q by r square, हमको ये पता है, right? Therefore delta U will be equal to minus R1 to R2 1 by 4 pi epsilon capital Q small q by r square dr, right? Therefore delta U is equal to, I just need some space over here. Therefore delta U is equal to minus 1 by 4 pi epsilon capital Q small q, all outside integration because they are constants, r1 to r2 1 upon r square dr. And at this stage you should be expert in knowing formulas of integrals. मैथमेटिक्स है या नहीं है, क्योंकि ये सिंपल से इंटीग्रल्स है, ये पता होना चाहिए. दिस इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q by 4 pi epsilon 0 या epsilon 1 upon r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है माइनस 1 by r, क्योंकि ये हो जाएगा r raised to -2 और r raised to -2 का इंटीग्रेशन होता है r raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1. तो ये आता है इन शॉर्ट minus 1 by r from r1 to r2. Therefore delta U is equal to minus minus plus capital Q by small q 4 pi epsilon 1 by r limits r1 to r2, and then I am going to just substitute upper limit minus lower limit. तो ये आ जाएगा आपका delta U is equal to capital Q small q 4 pi epsilon 1 by r lower limit upper limit, that is capital Q small q 4 pi epsilon 1 by r2 minus 1 by r1. Good, right? तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और ये पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट आल्सो वर्क डन फ्रॉम मूविंग चार्ज Q फ्रॉम A to B. ये आ गया आपका फॉर्मूला, राइट?
Normally what we do is just for the sake of convenience, okay, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा करोगे, but it is for the sake of convenience. What we do is, let us say this is equation number 1. For convenience, for देखो, it is again I am saying, अगर आपको ऐसा रखना है ऐसा रखो, equation number 1. But for convenience, normally R1 is equal to infinity and R2 is equal to R. Okay. Therefore, potential energy delta U is denoted as the potential energy at a point R from capital Q. The distance is R. So potential energy of the system, if they are separated by distance R, is equal to capital Q small q upon, right? और एक काम करता हूँ, what we'll just do is a very simple thing. So for convenience, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, R1 को infinity ले रहा हूँ, R2 को R ले रहा हूँ, कैपिटल Q को Q1 बोल देता हूँ एंड स्मॉल q को Q2 बोल देता हूँ. देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको हम लिखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस is equal to 1 upon 4 pi epsilon. Capital Q became Q1, small q was Q2, and distance was basically 1 upon R minus 1 upon infinity. 1 upon infinity is 0. तो आपको मिल जाएगा फाइनली u of R is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R. Equation number 2. So equation 1 and equation number 2 are the equations for potential energy of a system of charges. Correct? So equations 1 and 2, equations 1 and 2 are the equations for potential energy stored. It's just okay to say potential energy. All right, then we know what are the units of potential energy. मैंने आपको बताया units of potential energy joule है. So units of potential energy, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिखते हो. Okay, so let us now define what is 1 joule and what is 1 electron volt. So SI unit of potential energy is basically joule. So is joule denoted by capital J. जब देखो, you should know this also. I mean, it's very basic thing. ये 11th के पहले चैप्टर से आता है. अगर किसी यूनिट का नाम अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से आया है, तो जब आप फुल फॉर्म लिखते हो जूल तो स्मॉल जे लिखना होता है, एंड जब सिंबल लिखते हो तो कैपिटल जे से डिनोट करना होता है, राइट? दिस इज व्हाट यू शुड नो. देन वी शुड डिफाइन व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी. मैंने आपको बताया ऑलरेडी, 1 joule of energy is the energy stored in moving a charge of plus 1 coulomb
through a potential difference of potential difference of 1 volt, right? Then another convenient unit of, yeah, for potential energy is electron volt, denoted by EV, E capital V, right? और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इजी है. 1 electron volt is the energy gained by 1 electron while it crosses 2 points which are maintained at a potential difference of 1 volt. So 1 electron volt is the energy gained by an electron in moving through a potential difference of 1 volt, right? Good. फिर आपको पता होना चाहिए 1 EV is 1.6 into 10 power minus 19 joule. ठीक है, that can be done later. Okay, so in the next session what we are going to do is we are going to develop the concept of potential. मैंने आपको already बता दिया potential क्या है, but I am going to tell you again what is potential, right? Then what is the relation between electric field and electric potential, मतलब E और V में क्या relation है, right? एक बार ये समझ में आ गया तो उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डाइपोल है. व्हाट इज डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट, प्लस क्यू माइनस क्यू. इसका पोटेंशियल क्या होगा और सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल क्या होगा? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट सेशन बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम.